वर्क बोर्ड मुतवलीज रेस अगेंस्ट टाइम टू कंपाइल विद उम्मीद पोर्टल, ठीक है. तो वी read about work board also. So when we talk about it, what work is, so it means to stop, to hold. So basically it says that you cannot sell that property further, right? You cannot use that property further, right? So when we talk about work, there is another word also, hubs, right? So hubs kya hote hain? So basically there is a difference between these two. So work is like you are giving like whole right to the users, right? That you can use it socially, jitna aapko use karna aap use kar sakte ho. But when it comes to hubs, you have like partial rights on your property. Partial rights kaise? Suppose there is a woman, right? And she decided that I want to give my property to widows, right? Now that lady is going to decide about the management, who is going to take care about that property, how many widows or how many rooms are going to be allotted, ठीक है? तो वो सारी चीजें कौन देखेगी? That lady is going to do. So she is going to have like partial rights towards it. Even she can use that half portion of that property also, right? और वर्क पे बेसिकली क्या होता है? पूरा राइट होता है. So this is the difference between these two, right? So when we talk about basically these hubs, तो Maliki scholars जो है, they use this word. ठीक है. अब बात करते हैं कि वापस से वक्फ बोर्ड मतलब क्यों न्यूज में आया, ठीक है. अब ये तो समझ में आ गया कि जब भी हमें रिलीजियस चीज में या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए हमें इस्लाम में इफ यू वांट टू लाइक गिव आवर प्रॉपर्टी, तो वो वक्फ बोर्ड कहलाता है, ठीक है. अब वक्फ बोर्ड बेसिकली हर एक स्टेट के पास, हमें ये भी बताया कि वक्फ स्टेट बोर्ड है, which was implemented in 1995 and it was amended in 2013, right? So basically वर्क स्टेट बोर्ड से बेसिकली टेक केयर की मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं, ठीक है, रिलीजियस पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी जा रही है नहीं, और मुल्तवीज जो है विच आर लाइक केयर टेकर्स, ठीक है, वो बेसिकली ढंग से काम कर रहे हैं नहीं. इवन मुल्तवीज आर अपॉइंटेड बाय स्टेट बोर्ड्स, ठीक है. तो ये हमारी काम में है. दीज आर द बेसिक नॉलेज. नाउ व्हेन इट कम्स टू द न्यूज कि है क्यों, सो बेसिकली उम्मीद पोर्टल इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड. अब रेलवेज और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा लैंड होल्डर्स जो है हमारे पास वक्फ है, ठीक है. तो इतनी ज्यादा लैंड मैनेज करना इट इज लाइक इम्पॉसिबल एंड वी नो व्हाट प्रॉब्लम इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ इट. क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है इसकी वजह से? व्हाट कॉन्फ्लिक्ट? पर्सनल और वर्क के बीच में कि पर्सनल लैंड है, वर्क लैंड है, कॉज कई पेपर्स के कई लैंड के पेपर्स और मिसिंग हो गए हैं, फुल टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है. So basically work board is like taking care of management, ठीक है. प्रॉपर सारी चीजें it is managing, it is trying to manage basically, but still it is facing lots and lots of problem. This is why this portal उम्मीद portal is introduced, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं कि उम्मीद पोर्टल क्या है, तो इट इज यूनिफाइड मैनेजमेंट ऑफ एम्पावर्ड एंटिटीज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है. तो ये क्या है? बेसिकली यू हैव टू रजिस्टर दैट हाउ मच लैंड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, उसका मैप दैट वेयर द लोकेशन इज, who is basically mutalwis are there, right? कौन उसे देख रहा है, कौन केयर टेकर है, these things you have to register there, ठीक है. क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगे इसमें? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, there is another problem. Basically deadline is given to them 15 December से पहले पहले you have to like give it to them, ठीक है. You have to like present all the details. It's November, 15 नवंबर तक you have to fill these details, ठीक है. तो अगर डेडलाइंस दे दी है, ठीक है, and now you have to like come up with these details also, कौन केयर कर रहा है, लोकेशन क्या है, and then you have to submit the records also. तो प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करेंगे ये सारी चीजें फिल करने में उम्मीद पोर्टल पर? व्हाट डू यू थिंक दैट दे आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम? विल टेक मोर टाइम, विल टेक मोर टाइम, ठीक है. बेसिकली जो डेडलाइन दी गई है ये कहीं ना कहीं एक्सटेंड होनी चाहिए. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. एंड क्या होगा? So basically there are like 33,000 waqf properties are there, ठीक है. 33,000 registered waqf institutions are there, mosques, dargah, graveyard, etc., right? But many of them are like outdated या फिर उनके documents जो है वो missing है,
ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो तुम सबमिट क्या करोगे उम्मीद पोर्टल पर, राइट? सो दीज आर द चैलेंजेस दे आर गोइंग टू फेस। और क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा? कुछ कुछ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर लाइक हैंड रिटन इन उर्दू, कुछ कुछ के कुछ मिसिंग ही है ही नहीं। एंड व्हाट एल्स? कुछ कुछ इलीगली ऑक्यूपाइड है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स बेसिकली वी आर गोइंग टू फेस व्हाइल रजिस्टरिंग इन दीज पोर्टल्स, ठीक है? सो नाउ ये पोर्टल इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मुझे ये बताओ। ये तो हमें पता है कि लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स हैं वक्फ बोर्ड, राइट? ये रेलवेज और डिफेंस के बाद वी आर द लाइक वक्फ बोर्ड इज द लार्जेस्ट लैंड होल्डर। तो ट्रांसपेरेंसी गुड, व्हाट एल्स? बेटर मैनेजमेंट, ओके गुड, व्हाट एल्स? लाइक ट्रांसपेरेंसी विल बी देयर, ओके। रोहान? यस, और जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर आ रहा है वी कैन मॉनिटर दैट, मॉनिटरिंग के लिए इट विल बी इजी फॉर अस, राइट? रोहान, डू यू वांट टू से समथिंग? What are the challenges that we are going to face? So first challenge we'll face is, okay, time limit is short first, ठीक है। Do you think digital literacy सबको है? क्या प्रॉब्लम होगा इसमें? What people are going to face problem in? हाँ, and another one, all disputes, even those are not resolved, right? So how we are going to register? Basically, if someone is claiming that this land belongs to work board and there is some other person who is saying no, this belongs to me, I never donated it, so ये dispute ही solve नहीं हुआ, and there are so many cases which are still pending, वो ही solve नहीं हुए हैं, तो वो register कैसे होंगे portals पे? फिर उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? लीगल डिस्प्यूट जो भी मैंने मेंशन किया, इन करंट अफेयर्स यू नो द होल स्टोरी, राइट? स्टोरी तुम्हें, कहानी तुम्हें सब कुछ पता है, यू जस्ट हैव टू कम अप विद द कीवर्ड्स सो दैट यू कैन राइट इट डाउन। व्हाट एल्स? और क्या क्या हो सकता है? टाइम प्रेशर तुमने वो बता दिया। तो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी आर गोइंग टू फेस, राइट? अब बात करते हैं कि इसका रेलेवेंस क्या है। सबको समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? तो क्या क्या आपको डालना है? सो बेसिकली वी हैव टू लाइक फिल टाइटल्स आल्सो, मैप्स आल्सो एंड रेवेन्यू डाटा आल्सो, कि बेसिकली वो जगह कहां पर है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इफ सम लाइक इफ दैट प्रॉपर्टी, दैट वर्क प्रॉपर्टी इज बेसिकली वी बिल्ड मॉल ऑन दैट, राइट? तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एंड हाउ मच दैट रेवेन्यू इज यूज्ड यू नो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर उन सारी चीजों के लिए। इतना डिटेल वर्जन में यू हैव टू पुट द डाटा। नो डाउट उम्मीद पोर्टल बनाया बहुत अच्छी चीज के लिए, बट उसमें देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ चैलेंजेस जो फेस करने पड़ेंगे एंड समवेयर इट इज गोइंग टू लैक। अब ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसकी उम्मीद 100% है दैट इट विल कम इन प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है? नाउ डिजिटल डिवाइड हो जाता है क्योंकि एल्डरली टेक केयर्स नॉट टेक सेवी, उन्हें नहीं आता है टेक्नोलॉजी यूज करना, सो रजिस्टर ही नहीं कर सकते हैं, राइट? देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इन दिस। लीगल अनसर्टेनिटी, नए एक्ट के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू है वो कंफ्यूजन करेगा, क्रिएट करेगा, क्योंकि वो डिसाइडेड ही नहीं है वो प्रॉपर्टी है किसकी, राइट? देन पॉलिसी एंड लीगल कंटेक्ट, लो वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 सेज दैट रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन मैनेजमेंट, बट वो चीज दिखती हुई नहीं दिख रही है उम्मीद के पोर्टल के थ्रू भी, ठीक है? तो challenges we have discussed. Is there any question that you want to ask? Okay, अब इसका relevance क्या है? So basically no information about the internet, exactly गोपाल। So basically इसका relevance क्या है यूपीएससी से? जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस में it will come, ठीक है? And it will basically it is telling us about the laws and the weak implementation that we have discussed, ठीक है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उम्मीद पोर्टल में हमें। Then we have डिजिटलाइजेशन एंड इंक्लूजन। अब डिजिटलाइजेशन बना तो दिया है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, राइट? तो ई गवर्नेंस में इट इज बेसिकली कमिंग इन जीएस पेपर 3। देन जीएस पेपर 1 सोसाइटी में इट बेसिकली टेल्स अस अबाउट द रोल ऑफ रिलीजन, ठीक है?
क्या रिलीजन प्ले करता है, कम्युनिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, अबाउट दीज थिंग्स, राइट. देन रूल ऑफ लॉ एंड प्रॉपर्टी राइट्स, सेंटर और स्टेट का रिलेशन, राइट. नाउ बेसिकली दीज उम्मीद पोर्टल्स आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है. अगर सेंटर ने बना दिया बट दे शुड बी लाइक इम्प्लीमेंटेड इन स्मॉलर ग्रुप्स ऑल्सो. उसमें कौन हेल्प करेगा, हमारी स्टेट हेल्प करेगी. फिर उसके बाद हमारे पास GS4 में पब्लिक ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी और मिसयूज ऑफ चैरिटेबल प्रॉपर्टीज ऑल्सो कमिंग अप. इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? So what did we learn about from this? So basically this is a very nice step initiative taken by good governance, ठीक है. But there are like certain problems that we are going to face, and when it comes to religion, we people are like fool. Like I hate to say this, but we people are like, India is like so sensitive about religion कि वो religion के नाम पर कुछ भी कर सकती है. Agree? Is there any case that you want to discuss? So what did we conclude from this? Adarsh. इनिशिएटिव बट इसको मैनेज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम भी होगा आगे और थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. Wow. इतना टाइम नहीं. Coming to the next cues. So India 9th worst affected by extreme weather study. क्या समझ में आ रहा है इससे? So consider that there is a classroom, ठीक है, 180 students हैं. अब इस 180 students में से basically 80 फेल होते जा रहे हैं, ठीक है. And there is a monitor, दिवेश, ब्रैकेट में डाल दूंगी, but his name is German Watch. Now what he does, he basically finds out कि ऐसा क्यों हो रहा है, that people are failing, and not only finds out, he basically take cares that what are the reasons and what are the impacts that these students are facing after failing. So basically climate index क्या करता है, that every year German group called German Watch keeps checks that who is getting most affected by these climate problems, ठीक है. Basically जो भी droughts आ रहे हैं, floods आ रहे हैं, right, उनसे बेसिकली आ तो रहे हैं वो बहुत ज्यादा, दैट्स अनदर स्टडी, बट उससे कितना इम्पैक्ट हो रहा है और कितने लोग बाहर आ पा रहे हैं, कितनी कंट्रीज बाहर आ पा रही है, दैट्स दिस इंडेक्स टेल्स अस अबाउट, ठीक है. तो बेसिकली हर इट रिलीजेस अ बेसिकली रिपोर्ट व्हिच इज कॉल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. क्या बताता है ये, दिवेश? गेट अप, इट्स ओनली 11 एंड यू आर फीलिंग सो स्लीपी. Basically records the score of how much damage is done to the country or how much damage is done to the area, particular area, and makes a ranking table according to that. So India stands 9.9. Exactly, हम टॉप 10 में हैं, so basically this is nothing to celebrate about, ठीक है. तो अपने कॉलर नीचे करो क्योंकि हम 9th पर हैं, ठीक है. So what it says कि जितना भी हम अफेक्ट हुए हैं, राइट, हम जैसे अफेक्ट हो रहे हैं, हम रिकवरी नहीं हो पा रहे हैं. So it's like that you fall, right, and then before you stand up, right, तुम दोबारा गिर जाते हो. So this is the case that is happening with India, and there are certain reasons to it. पहला रीजन ये भी हो सकता है कि population, then we have limited resources, and फिर उसके बाद because of the geographical reasons also. So we are going to study all these together. चलो तुम बताओ क्या reasons हो सकते हैं. Like the peninsula is surrounded by 3 regions of water bodies, so like it is very prone to cyclone and the water. So it is affected by the water movement, like tides and everything. And then okay, so basically ये क्या क्या मेजर करता है, पहले तो ये मेजर करता है कि कितने लोग बेसिकली किल हुए हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ पीपल किल्ड, नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ है. नाउ इफ बेसिकली ड्राउट, फ्लड्स, ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, राइट, तो उसकी वजह से हमें रिसोर्सेज वहां पर लगाने पड़ेंगे, राइट. देन देयर इज लाइक बोथ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड रिलेटिव टू कंट्रीज साइज एंड पॉपुलेशन आल्सो, व्हिच इज अनदर फैक्टर, राइट. देन पर्पस क्या है, पर्पस इज टू हाईलाइट that which countries are suffering the most from climate related issues, ठीक है, or if we are like facing these disasters, like if we are coming out from it or not, right,
और कितना रिसोर्सेज हम इस चीज पे यूज करते हैं, और फिर इट ऑल्सो डिफाइंस आवर इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज ऑन दैट सर्टन प्लेस, राइट, तो कहीं से तो हमें कट ऑफ करना पड़ेगा, राइट। सो अब हम करते क्यों है, तो देयर इज लाइक स्मॉल आइलैंड फिजी या फिर बांग्लादेश में, एंड इट्स गेट लाइक फ्लडेड वेरी बैडली ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। सो रिच कंट्रीज लाइक जर्मनी दे कैन कम फ्रॉम इट, है ना, उनका कोप अप हो सकता है, बट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश छोटी कंट्रीज है, कैन दे कम अप फ्रॉम दिस, व्हाई? After effects of the flood will be like the roads damage, the housing damage, the property damage, and the work over there. Be- There will be many losses which will be hard to recover because of the huge population and limited resources. Yes, so because of this countries like this cannot come up from these things, है ना, उन पे impact ज्यादा होता है, and this is what index tells us. So basically अब इस रिपोर्ट ने बोला क्या है? Okay आशुतोष, I got your point. So 2026 एडिशन के हिसाब से which studies data from 1994 to 2024, ठीक है, तो इस डेटा के हिसाब से we got to know that the world faced more than 9,700 extremes, ठीक है, so around 8.3 lakhs, right, 8.3 lakhs people are killed because of this, ठीक है, this is what this data tells us, and then total economic loss is 4.5 trillion, and let me tell you in US dollars कितना लॉस हुआ है हमें, ठीक है। So India is in top 10 most affected countries and we are ranked 9th, ठीक है। तो अब इंडिया के लिए इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया के लिए इसका मतलब हुआ कि बेसिकली वी आर हिट फ्रॉम लाइक डिफरेंट डिजास्टर्स, ठीक है। पहला जैसे कि साइक्लोन, अलग अलग उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, राइट, देन हीट वेव्स, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, इस बार का टेम्परेचर वी ऑल नो कितना गया था, एग्जैक्टली exactly. और फ्लड्स, फिर उसके बाद लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स असम वगैरह में लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिलती है। सो दीज आर द रीजंस व्हिच आर कमिंग। हम ये सारी चीजें फेस क्यों कर रहे हैं इतनी ज्यादा? व्हाट आर द रीजंस? पहला रीजन क्या होगा? बताओ। क्लाइमेट चेंज, ओके, ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज, ओके। तो इंडिया की लोकेशन जो है वो बेसिकली ओपन है, राइट, अरेबियन से भी और बे ऑफ बंगाल से भी, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि दोनों तरफ से हमें बेसिकली साइक्लोन देखने को मिलता है, और बिकॉज ऑफ दिस वी हैव लाइक हिमालयाज इन द नॉर्थ आल्सो एंड देयर आर डेजर्ट्स इन द वेस्ट, तो वो हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है टू मैनेज लाइक ऑल द फोर साइड्स, ठीक है। एक से मैनेज करते हैं, देन द साइक्लोन हिट्स टू द अनदर, और फिर उसके बाद तीसरी तरफ से डिजास्टर आ जाता है, जब तक हम एक तरफ से मैनेज करते हैं। सो इट्स लाइक दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय मेनी साइड्स, और वो चीज मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता है। अनदर फैक्टर इसके अलावा, अंकिता जल्दी, इतने सारे फैक्टर्स हैं। Okay, so you are somewhere like blaming government for this. We are like not aware of the factors. Loud. बट वो तो लाइक डिजास्टर होने के बाद का इम्पैक्ट यू आर टेलिंग ना, व्हाई दीज डिजास्टर्स आर अकरिंग। Okay, can we say population also? How population? इंडिया का तो आई डोंट थिंक आई हैव टू इवन एक्सप्लेन दिस पॉइंट, बट ओके। दिवेश खोल लो आंखें प्लीज। So there are people like who are living in flood plains, ठीक है, और कोस्टल एरियाज में रहते हैं,
तो उनके लिए मेजर करना एंड टू टेक प्रिकॉशंस इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब ये भी नहीं कर सकते कि वहां से हटा दें, है ना। तो दीज आर द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग। उसके बाद रिकवरी टाइम, व्हाट रिकवरी टाइम मीन्स, जो पहले डिजास्टर हुआ उससे रिकवर करने का टाइम मिल ही नहीं रहा है हमें, है ना। एग्जैक्टली तो हम इसे इस एग्जाम्पल के लास्ट की तरह ले सकते हैं कि सपोज villagers in Assam, they wake up to floods, roads disappear and then crops is gone, right? फिर उसके बाद अगली सुबह दिल्ली 48 डिग्री सेल्सियस राइजिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसके बाद तमिलनाडु साइक्लोन डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। फिर उसके बाद अगले साल महाराष्ट्र में ड्राउट्स और रीजंस आ जाते हैं। तो उसके बाद ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता है, राइट। इंडिया को क्या करना चाहिए इस चीज के लिए? नाउ दीज आर द मेजर्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। क्या मेजर्स लेने चाहिए? The pointer that you mentioned before. Measures क्या क्या होंगे? I'm sorry? Weather station setup कराना, okay. Prepare before, good. Yes, what else? There is something we can do about the cyclones, like building some brick, like the banks. Early warnings basically we can give, yes. What else? अगर देखा जाए, if we take example from this, तो उड़ीसा में मैनेजमेंट, साइक्लोन मैनेजमेंट कैन बी सीन दिस ईयर। क्यों हुई है वो? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, कि पहले से प्रिपेयर कर लिया था, राइट। व्हाट एल्स? अनदर पॉइंटर, बिल्ड स्ट्रॉन्गर। क्या है बिल्ड स्ट्रॉन्गर? व्हाट विल बिल्ड स्ट्रॉन्गर? Like the after effects of the disaster. It wouldn't affect that much, like the loss would be not that much of the. So whatever the flood areas are, we can prepare the platforms properly, right? Housing, hospitals, we can prepare there properly. Okay, next. Educate people. Your pointer, Ankita. Explain it. Sanya says proper management to recover fast from natural calamities. Okay, perfect. It comes under the prepare before. Very good. Like making them understand that how to deal with the Situation, save water, plant trees, all of these. Good. Very good. You woke up. Oh, good morning. Okay. Next, what else we can do? Global help. क्या global help लेंगे? Exactly. So these rich countries which are already developed and have so many resources, they can provide us with the help, right? Okay. Did you understand in here? Anything you want to ask? building a good drainage system is also. Yes, building a good drainage system, another factor. Good. So यहाँ से क्या समझ में आया? That adaptation now, early warning should be given, right? Cyclone shelters, like early plannings that we were talking about. Okay. So these are the things. Then insurance solutions, parametric weather index insurance for quick relief, your pointer. Then urban planning, right? Avoid floodplains, climate proof infrastructures, all of these plannings. It should be like done before, right? Before the disaster. Water sprinkler like things like they can be planned. Like in the eastern countries, there is this thing going like technological that they sprinkle water over time around the light poles and area to maintain the temperature around it. Because all the eastern states are almost in like middle of the desert. So to deal with the heat waves, they do this. So we can also implement it in the areas which are prone to high heat waves and high heat temperatures. Exactly. So we can take these measures also. Ruhan, why are you quiet today?
Okay. Next we have finance for loss and damage. So strengthens India's case at COP talks for climate finances. अब अगर हमारे पास resources ही इतने ज़्यादा limited है, right? So we cannot help our people. So what do we need? Strong finances. Whatever damages we are like facing, right? We have to like cope up with that. Otherwise, resources limited होते जाएंगे, population बढ़ती जाएगी, and then we are going to face these challenges again and again, and there will be no cure to it, right? Next we have vulnerable groups. As I've said कि जहाँ पर भी ज़्यादा impacts हो रहे हैं, right? जो भी zones हैं which are like highly impacted, तो वहां पर we should like make shield fixtures on the coastal areas. Yes, very good, perfect. Okay, अब इसका relevance, why do we need it? So basically it comes in GS3, right, and talks about disaster management, environment and climate changes. There were questions also. Okay, so there is this question with reference to the Ummeed portal recently seen in the news. Consider the following statements and tell me the correct answer to it. This is the third pointer. चलो बताओ. One and two. With the reference to the Ummeed portal recently seen in the news, consider the following statement. It is a digital platform launched by the Minister of Minority Affairs for managing and digitizing Waqf properties across India. It aims to enhance transparency and efficiency in the administration. Waqf asset under the Ummeed initiative, the management of Waqf properties has been completely transferred to the central government. One and two. Pakka? Like it's not completely transferred. It's like transparency is there between the. Why not three? That's what I'm saying. Like it's not completely transferred. It's just a transparency. Like the control is still under the state boards, but it's transparent now to the central government and the state government that about the revenue, about the land. So yes, okay. The completely transparency is not there because of the challenges that we have discussed. Okay, good. Okay. Another question. The German Watch Climate Risk Index ranks countries primarily on which of the following? It's capita. क्या नहीं होगा? C alone cannot be an option. It should, if it would have been with something about economic or weather, then it would have. Waiting for your answers. Tanya says 1 and 2 only. So 1 projected future temperature rise. Okay, another student says B. 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 Should I go with B? Lock कर दूं? इसी से तुम्हारा prelims clear हो जाएगा. Are you sure? Think about it. It's about prelims. The answer is B. Okay. Yes, Sanya, it's B. Okay. Now coming and relating it to the philosopher. So, a thinker, Kant's philosophy focuses on duty, morality, and good. So, governance guided by reason, not by selfish interest. So, he introduced the idea of categorical imperative, right? And he said that act only according to that maxim's rules, which you can at the same time will that it should become a universal law. So, what it says, so Kant says that if you want to define good, right? So, thinkers had like huge debate about definition of good. So basically, thinkers had this huge discussion about what is the definition of good, right? So because it can vary like person to person, right? Even in this situation also, कि कहाँ पर ज़्यादा impact है coastal areas पर, right? और किसको ज़्यादा resources की ज़रूरत है, right?
these things tells us कि definition of good and right, it cannot be defined, right? It can vary situation to situation, person to person, right? So when it comes to Kant, what Kant says, that when it comes to right and goodness, right? For example, decide it yourself that if stealing is good, like if someone says, if Devesh says that stealing is good, right? You're agreeing to it. So if he says that, oh, it's nice, stealing of knowledge, okay. So he says that I love to steal and it should be like universal law, right? Now he says, consider this implementing on each and every one of us. What if in the society everyone start stealing, right? Can we consider it something like act of goodness? No, right? So because we cannot consider it, right, as an act of goodness, like in the whole society, then we will not consider it a part of goodness. तो इसी बेसिस पे ही डिफाइंड लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स कि अगर सोसाइटी में कर सकते हैं और उस चीज को जनरलाइज कर सकते हो तुम, तो कंसीडर इट टू बी अ गुड पार्ट, अदरवाइज यू शुड नॉट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट सेज. और ये बेसिकली अनदर इज गिवन बाय कांट, कंडीशनल ट्रूथ. So what conditional truth says? So what conditional truth says? Conditional truth says that if you want to do X, do Y. If you want to clear UPSC, study PYQs. If you want to pass UPSC, study hard, right? Categorical imperative is basically unconditional. Do what is right because it is right. Tell the truth always, right? Because it is conditional. It is like implemented on everything, right? So categorical conditional is that for certain phases you have to do. But this unconditional is that you have to do this at any cost, right? So this is unconditional and it is basically implemented on everyone, like the definition of rightness, like the definition of not killing to anyone or not harming anyone. So this is the difference it gives. How will you put it in basically this news in current affair? Truth. What if you are like want to save from the disaster, you need to prepare for it, make it build from all the points we made. Okay. Ankit, तुम वही चीज बोल सकती हो because I know your keywords will be different. See, even the first two words are different. Okay. Now, next news is that tuberculosis incidence falling in India by 21% in year, and this is a report of WHO. So it was like a goal ki by 2025 or by 2030 we have to end this disease. Okay, this was our goal, but India decided no, let's end it by 2025 only. ठीक है, so we started taking our measures और अभी रिपोर्ट आई है कि 21% बेसिकली पर ईयर बेसिकली फॉल हुआ है इसका, केसेस आर लाइक सीनलेस. अब हम ये देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि आर लाइक इज दिस द मिरर और लाइक इज देयर सम शेड टू इट. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इट सेज कि इंसिडेंट्स में ये आया है कि जो नए केसेस हैं वो कम हो रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स. ठीक है, दिस इज व्हाट WHO रिपोर्ट सेज. नाउ if these incidents are falling, this means that fewer people are getting infected in a row, है ना? So this is like a real improvement which is happening in public health care. If classroom had like 100 new cough, right, and cough people students, और अब वो उसका डिडक्शन 80 से हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो फॉल दिख रहा है हमें. अब उसके बाद जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टीबी की, तो इट इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम बायो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, जो अफेक्ट करता है लंग्स को एंड इट स्प्रेड्स बाय कफ. सो दिस इज लाइक वन ऑफ द मेजर किलर वर्ल्ड वाइड, बहुत राइज पे था स्पेशली इन इंडिया. एग्जैक्टली आफ्टर कॉमन कोल्ड. सो एंटीबायोटिक्स लाइक exactly, so these antibiotics basically they came and they helped us a lot. जो ये हमें fewer cases दिख रहे हैं, जो हमें falling दिख रही है, वो इन्हीं antibiotics की वजह से हमें दिखाई दे रहा है, right?
Now India launched DOTS. There are certain strategies that India launched, right? There are certain things that India did, awareness spread करी, और उसके बाद we reached to this phase. Okay, and there were certain vaccines also. सबसे पहले तो myth हटाया इंडिया ने, गवर्नमेंट ने क्या किया था? Not about the vaccine, about the tuberculosis. That it spreads through air and it spreads by touching. So this was like the big myth that was happening. और उसकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे और उसकी वजह से ज्यादा स्प्रेड हो रहा था. प्रिकॉशंस तो कोई तब लेना जब तुम पहले रजिस्टर करो. पहले अगर कोई बीमारी हो रही है, so first you have to register yourself. बताओ तो सही that you are facing this problem, तभी तो तुम्हें क्योर मिलेगा. तो बेसिकली पहले तो वो मिथ्स पे काम करना शुरू करा गवर्नमेंट ने, and then it started working on, then we started making these antibiotics, right? We started working towards it. Awareness के साथ साथ we started working toward these antibiotics. Okay, so WHO report says that India's TB incidence, that means the number of new TB cases each year has fallen by 21%, which is nearly twice the global fall of 12%. ठीक है, globally कितना कम हो रहा है? 12%, और इंडिया में 20%. So it's a huge win for India. ठीक है, अब so this means that India's rate of improvement is faster than world average, है ना? और it's a sign that India's programs may be working more efficiently recently. ठीक है, जितने भी एंटीबायोटिक्स अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, राइट? सो अब जो ये ड्रॉप दिखा है, do you think that it is the whole reality? Can there be like another reasons too? अच्छा ठीक है, अगर ये ड्रॉप हो रहा है तुम्हारे हिसाब से, like why this drop happened? What might be the reason? Okay, awareness is one of them. Okay, testing, awareness. Awareness, what else? Okay, development in medical field. Drives like vaccination drives. Consultation. Another important factor, as I was saying. Vaccination drives. Okay. Registration of the cases, first important, very major factor. Where? Okay, yes. Okay, got it. Thank you, Dr. Divesh. Okay, so what caused the drop? First one is that better case finding and testings. ठीक है, अच्छी machines आई हमारे पास, ठीक है, molecular test, active health worker visits. People started, analyzing these disease not as something hazardous कि भाई touch करेंगे और उसके बाद ये फैल जाएगा, right? It's not spreading in air, right? So people started taking this, this disease as something common like cough and cold, right? Then next is that improved treatment and adherence. तो हमारे पास वैक्सीन आई, ठीक है, शॉर्टर एंड इजी मेडिसिन कोर्सेज वर गिवन टू देम, जैसे बुखार में दिया जाता है, एक ड्यूरेशन का कोर्स होता था एंड पीपल स्टार्टेड फिनिशिंग इट, और उसके बाद रिजल्ट्स वर सी. Then examples, a patient completes treatment, no longer spreads TB, strong public health system and reporting was seen. ठीक है, then doctors now report TB cases to national systems, better follow up and medicine supply could be seen. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी था, रिपोर्टिंग भी इजी थी, और उसके बाद कोर्सेज भी लोग कंप्लीट कर रहे थे प्रॉपरली बिना उस चीज को लाइक गलत वे में लिए हुए. ठीक है, देन नेक्स्ट इज बेटर न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, हेल्थियर पीपल, लेस वल्नरेबल. बेसिकली क्या है ये, इस लाइन को कौन एक्सप्लेन करेगा? When like the analytic keeps doctor available, you focus on your immunity, good supplementation of vitamins and minerals and all the things that are essential for the body. Then you will be healthier and there will be less chances of you getting infected by any virus and any type of disease. You are less prone to any disease. What do you think? So when patient complete full treatment, they stop being infectious, right?
shorter better treatment basically, and this helps, free medicine helps जो है वो चली जाती है, right? तो stronger public health and system and notification. Okay, so basically it tells us that improving nutrition, reducing overcrowding, right, and better living condition reduce vulnerability, right? Example जैसे कि family that gets better housing and food faces lower TB risk, ठीक है? Nutrition अगर proper मिल रहा है तो नहीं होगा, ठीक है? फिर उसके बाद is it somewhere relating to poverty also? People below poverty line or Yes, people below poverty line, basically overcrowding places where they used to like live, and that was like major factor that these diseases were is increasing. Exactly. Yes. Then focused campaigns and political commitments. Okay. So basically, it is like government campaigns, like awareness drives, incentives, patient, community screening. These people, basically, these things bring people forward, right? And basically analyzing that yes, these kinds of disease exist, and there is a cure to these diseases, right? Then district holds TB weeks, finds cures and early cases. So these were the measures that were taken. Then COVID-19 recovery effect. What do you think that like it impacted? How it impacted? India many like people now know what precautionary measures are, how to deal with a pandemic situation or something like diseases which are contaminated in air or spread through contamination. So you think that our medical field basically People are also aware and medical field evolved because of it, and because of this we are like able to take more measures. Okay. Others, do you have anything else to say to this? Like this. Ankita, is there any other side to this news? Do you think अगर 20% अगर decrease हुआ है, it is like fallen to 20%, and it is a like very big number. So do you think it is so, or is there any other side to this that we are missing, or that you are missing? Can there be any other side? There is. I'm just telling you to please look into it. Think. COVID-19 plays a major role in that other side. What vaccination? What vaccination? Acha, what if like COVID-19, right? So it affected the incidence report. What if changed basically incidence numbers ही हमारे change हो गए COVID-19 की वजह से? Like there is this another view that like you said that medically we are like evolved. Okay, but can it be the case कि हम लोगों ने cases register नहीं कराए because of COVID-19 क्योंकि हमने vaccine लगाई थी, and then we don't want to like register the cases of this tuberculosis, और फिर उसके बाद 20% fall हो गया हो? Yeah, death rate will also would have increased because of that, but the death rate is not increasing. Tuberculosis cases. But you know ना, like now it is like easily curable, but यहाँ पे registration की बात हो रही है. Number of people are like registering them in these cases. Then, so can it be the case that it is either like temporarily decreasing, or it is like basically detention is like not seen for now? Can it be the case? Final statement. Like if we have to like see this news in another angle, can we see it in this way also? How? Like people, like the government is more focusing on COVID-19 rather than tuberculosis, and because of that, the patients are not being registered and consultations. So we can say that this incidence number is like temporarily. It can be the case. Okay. Maybe it could rise after a few years again, and there will be more registration. Exactly. So now why this fall of incidence is basically it matters to us and is important. अगर
फ्यूअर डेथ्स होगी तो लेस सफरिंग होगी, ठीक है। लेस सफरिंग हो रही है तो हमारे पास क्या रहेगा, सपोज फ्यूअर नंबर ऑफ केसेस, लेस सफरिंग, less suffering, more resources. More resources, it will lead us to more economic development. क्या है हम सब? We are just resources to this country. Do you see yourself as a resource? In a coming future, yes. Okay, you? Ruhan, you? Hair. Do you see yourself as a resource? How? Okay, so this report doesn't prove automatically that these is like real reduction in transmission, या फिर basically ये improve हुआ है deduction का. This report can change, basically reporting can change, right? So this effect can basically this can be the effect after COVID-19 also. Understood. यहाँ से समझ में आ गया कि ये इंसिडेंट्स हमारे लिए मैटर क्यों करता है. अगर ये केसेस फॉलो हो रहे हैं तो बिकॉज इट विल लीड अस टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, बिकॉज वी आर नथिंग बट रिसोर्सेज टू आवर कंट्री. नाउ इट रिड्यूसेस इकोनॉमिक लॉस आल्सो. अब जो ये पैसा बेसिकली इस डेवलपमेंट में, इस बीमारी में लगा रहे थे, नाउ वी कैन यूज दिस मनी समवेयर एल्स, समवेयर इन मोर क्रिटिकल इश्यूज. नेक्स्ट इज what to be cautious of fall in number may mean that real decline in infections or change in reporting detection. What if people are not reporting? We are facing again the same problem, the same situation that we were facing before, right? कि लोग report ही नहीं कर रहे, detect नहीं हो पा रहा है. We are basically going backward. Like there is this another angle that Divesh said, but this can be the case also कि हम detect ही नहीं कर पा रहे हैं, right? So this can be like temporary fluctuation post COVID. This can be the effect of post COVID-19. Okay, so there is a thinker, Michael Foucault, and he says that modern governments don't just rule people through laws, they also care for their lives, their health, and their bodies, and he called this idea by power. Keyword that you can use in the paper. So basically, अगर कोई government, ठीक है, सिर्फ basically economic development के बारे में सोच रही है and not thinking about the about the resources that they are generating, right? So this is somewhere basically this government is lacking. So this is what Michael says, that one government should not only look towards the economic development but also should look at the health of the people, ठीक है. So when India fights disease like TB, right, it's an example of by power, the government ensuring that its citizens stay alive, healthy, and productive. So what you can write that Foucault explained that power today means taking care of people's life. India's TB mission shows this is the government is not just governing, it's healing. क्या समझे? दोबारा खोलना, मुझे तो पता ही नहीं था ये. सम अप करना है इसको दिवेश. Basically, according to Michael Foucault, he says that modern governments are not just ruling over people and governing them on state basis or the different types of basis that they are, but they are also caring about the lives of people that are doing drives, doing awareness camps, and looking for government vaccinations to provide a better health, a better life to people for their living, as they are the only resource right now for the modern government to exist, because there will be no tomorrow for the people living right now who are suffering with diseases and prone to diseases, then there will be no tomorrow for the governments to do. It's for their betterment. Perfect, very good. You woke up again. So from this we learned that incidence is like falling by 21% in India. It is like a strong sign of progress. ठीक है, एक तो ये वाला angle है.
एंड दैट ग्लोबल डिक्लाइन वाज 12%. ठीक है, तो ग्लोबली से ज्यादा हम लोग बेसिकली अच्छे जा रहे हैं. Then drivers include better testing, improvement system is there, stronger healthcare is there, right? We have better resources. ये भी पता चलता है हमें इससे. Then there are like certain questions. Trend must be watched over time. ठीक है. So basically, if it is like falling, so we should like understand the reason behind it कि क्यों fall कर रहा है. Then इसके बाद करना क्या है? हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? We can decrease the post-COVID effects, like the mentioned, like people are not mainly focus over COVID, so we can now shift our focus back to some other diseases. Exactly, we have to keep investing in diagnostic. Yeah, and like not just stuck on the pandemic situation. And medicine, exactly. ठीक है, सबको समझ में आया? Read the question and answer. Two and three. इतना बड़ा तो क्वेश्चन भी नहीं है. मुंह से बोलिए प्लीज. Why? चलो, आज का बिल फिनिश इट है. Is there anything else you want to discuss? समझ में आया? I'll see you tomorrow also.